Hello students, in previous lectures we have classified the material in three categories and now I am going to start a very important topic of this chapter, electrostatic induction. Before going to start, I will explain you or want to understand you two things. This body is having charge, positive charge or negative charge. How will this body will get the charge? So please see this side. You know every atom is electrically neutral, means if nucleus has 4 positive charge, then there will be a 4 electrons which are revolving around this nucleus, around this positive charge. So what will happen? This is the material or the box. It has 0 charge. It means that it is having the 0 charge because it is also an atom, no? But ये होता कब है? Then there is a condition. It happens at 0 Kelvin. At 0 Kelvin, the condition of any material is like this. Means minus 273 degrees Celsius. It is at very cold, 0 charge. This electron is moving. When this electron is moving, and we are giving some energy like heat energy, then what will happen? These electrons will move and go like this. At moment when it will leave their orbit, then there will be not single box, there will be 2 boxes. One is inside and one is this side, and this is whole material. What will happen? जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो एंटाइटी, so there will be a negative charge on this, in this box. इस प्रोसेस के थ्रू हमने देखा कि इस मटेरियल पे अब होल चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, तब भी ये चार्ज कितना है? 0 चार्ज. टोटल चार्ज इज 0 चार्ज. But now there are 2 particles. First is having the positive charge and second is having the negative charge. Same here in this material there are different particles. Some are having positive charge, some are having negative charge. तो चार्ज आता कैसे है? आई वॉन्ट टू पुट सम चार्जेस. तो वो आया कैसे? दिस इज द प्रोसेस कि किसी भी बॉडी पर चार्ज होता कैसे है. तो इस प्रोसेस को आपको समझ में आया. अब मैं इसी के ऊपर आगे चलता हूं कि आई एम टेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को विदाउट टच हम चार्ज करेंगे. या इस प्रोसेस को पहले समझेंगे, प्रोसेस होता क्या है. वी आर टेकिंग अ मटेरियल, दिस इज अ मटेरियल,
This material has many particles. Some are having the positive charge and some are having the negative charge. Equal number positive charge, equal number negative charge, so it has zero charge. It has zero charge. This negative charge will move here and there, sometimes here, sometimes here, sometimes here. They will spend their time here, there, in all directions. The electrons will spend their time in all directions. Suddenly, or after some time, or a moment, I take a positive charge glass rod. I am bringing a positive charge glass rod near this material. I am not writing the neutral, I am not writing the positive and negative charge, I am just writing the excess charge. It is the positive charge body. I am bringing just near the material which are having zero charge. Suddenly I will see the electrons which are revolving here and there and spending the time in all directions. A moment later, these electrons will mostly electrons will spend their times on this side, and mostly positive charge will spend their time on this side. I am just drawing it here. It is the positive charge. Not on the whole charges, but mostly of the electrons will come this side, and mostly positive charge will go this side. Why? Because this excess positive charge will apply a force on it. They will apply the repulsion on positive charge, and on negative charge they are attracting. Because it has the property attraction and repulsion. Whenever on mostly charges are spending their time on this side and mostly are spending their time on this side, negative and positive, it means that we have separated the positive and negative charge in the material. जनरली इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. जनरली हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन. पोलराइजेशन मतलब होता है पार्टिकल्स को डिफरेंट करना, पार्टिकल्स को सेपरेट करना. एग्जाम्पल, मेरी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बैठे हैं. बॉयज आर ऑन दिस साइड, गर्ल्स आर ऑन दिस साइड. देन what happened? Polarization. If you want holiday, second example, if you want holiday on Thursday or on Friday, some are saying Thursday, some are saying Friday, means that our decision is polarized. So polarization मतलब पार्टिकल्स को डिफरेंट करना, पार्टिकल्स को सेपरेट करना. इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन. सेपरेट करना पार्टिकल्स को मटेरियल के अंदर. और ये जो पार्टिकल सेपरेट हुए हैं, ये हुए हैं इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से. सो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन.
this is the electrostatic induction. This phenomena is called electrostatic induction. So I am just writing a definition. So I have written this definition: electrostatic induction. When a charged body is brought near an uncharged conductor, uncharged मतलब neutral, which are having the zero charge, the free charges is conducting get polarized. This phenomena is called electrostatic induction. अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि this the force is applied by this material, this glass rod. Force is applying, the force is attractive also there, the force is repulsive also there. तो इस वाले ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? क्वेश्चन इज दैट. तो मेरा आंसर है अट्रैक्शन होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज डिस्टेंस इज लेस, एंड दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव आर डिस्टेंस आर हैविंग द मच डिस्टेंस. तो दिस इज द लार्ज स्मॉल डिस्टेंस एंड दिस इज द लार्ज डिस्टेंस. सो जिसमें डिस्टेंस कम होगी वहां पे फोर्स ज्यादा होगी. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा अट्रैक्शन. फोर्स का जो नेचर होगा कैसा होगा? वो अट्रैक्शन होगा. अब एक चीज हो रहती है कि इंडक्शन पहले हो रहा है या अट्रैक्शन पहले हो रहा है. तो ऑलवेज पहले इंडक्शन हुआ है, आफ्टर दैट अट्रैक्शन हुआ है. तो याद रखना, इंडक्शन नोट है ये हमारा, इंडक्शन प्रीसीड्स attraction always, है ना. So this process is called electrostatic induction. Now in next lecture we will study about the charging by conduction and charging by induction. Thank you guys.